Hello, my dear students. I hope you all are good. So, today we are going to start with another subject that is computer. What is a computer? How it works? कैसे काम करता है आपका ये computer? So, in this topic, we will be studying about computer and all its unique features. So, let's begin with our topic. So, do you know what are machines? Machines makes our work easier and faster. We have various appliances in our home. For example, your washing machine, your refrigerator, air conditioner, your music system. These all are kind of machines. But they can do single task at a time. So there is another machine which is known as your electronic machine, that is your computer, electronic device. It can do several tasks at a time. एक साथ बहुत सारे task perform करता है. So a computer is an electronic device operating under the control of instructions. उसको instructions मिलते हैं तब जाके वो काम करता है. It accepts the data, it processes the data, and it produces the result, and that result is stored for future use. So now you know what is an electronic device, but do you know how it works? Computer कैसे काम करता है? Computer works on IPO cycle. IPO stands for input, process, output. The data is entered into the computer and that data is your set of instructions. कौन help करता है set of instructions को अंदर enter करने में? The devices are known as your input devices. Input devices are those devices which helps you to enter your data. For example, your keyboard, mouse, your microphone, scanner, these all are your examples of input devices. Now the data is entered into the computer. Now it has to be processed. So the data is processed by your processing device. CPU is your processing device. CPU is also known as your processor as well as brain of computer. यहाँ पे आपकी सारी प्रोसेसिंग होती है. सब जितना भी काम होना है इंस्ट्रक्शंस पे, टास्क परफॉर्म होना है, वो सब प्रोसेसिंग डिवाइस करता है. And finally, when the data is processed, the information is produced as a result. So it is shown, it is displayed by your output devices. समझ में आया? What all are your output devices? Your monitor, printer, speakers, these all are your output devices. Output devices helps you to show or display the result. So there is a big difference between data and information. Data होता है आपका raw information which has no meaning. They are just the set of instructions जो हम input में देते हैं, right? And एक प्रोसेसिंग होने के बाद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल जो रिजल्ट हमें प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज योर रिजल्ट इंफॉर्मेशन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन एंड दैट डेटा जो आपका इनपुट में है वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू प्रोसेसिंग डिवाइस. A computer often holds data, information and instruction in storage devices. There are many storage devices which helps us to store the result, store the information, data and the instructions. Storage devices कौन सी होती है? आपकी hard disk which is present inside your system, your pen drive, your optical devices, CD, DVD, these all are your storage devices. The next topic is characteristics of computer. The first we know, that is speed. The speed of computer is much faster as compared to human brain.
Computer can process information 1,000 times faster. वो बिग डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म कर सकता है, कैलकुलेशंस लॉन्ग कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है इन अ फ्यू सेकेंड्स. द नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. द कंप्यूटर डजंट मेक मिस्टेक्स. वो गलतियाँ नहीं करता. इफ़ यू गिव द करेक्ट इनपुट यू विल गेट द करेक्ट आउटपुट. आप इनपुट जैसा दोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा. अगर आप इनपुट ही गलत दे रहे हो तो आपको आउटपुट भी गलत मिलेगा. अब वो ये सही नहीं कर सकता. हम इसको डम मशीन भी कहेंगे. इट इज़ अ डम मशीन. इट वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन. जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वैसे ही उसका आउटपुट आएगा. सो नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक. इट इज़ ऑटोमेटिक. इट डजंट नीड एनी ह्यूमन सुपरविजन. यू नो दिस थिंग. हम ये तो कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस के टाइम पे ह्यूमन सुपरविजन की ज़रूरत है, बट ओनली एट द टाइम व्हेन वी एंटर द डेटा. इट नीड्स टू गिव सर्टेन इंस्ट्रक्शंस. आफ्टर दैट no supervision is required. So the computer is versatile in nature, that is, the use of computer is no longer limited in schools and military operations. अब हम कंप्यूटर और भी डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक्स में यूज़ करते हैं, रेलवेज़ में हम यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज, मेडिकल फील्ड्स, हर जगह वी आर यूजिंग दिस सिस्टम. So it is versatile in nature. Now what all are the advantages of computer? Let's see. The first is your high speed. Computer works at very high speed. Fast it is. This device is very fast. It can perform millions of calculation in few seconds as compared to normal human being. Certain units of speed होती है कंप्यूटर की, that is microsecond, nanoseconds, picoseconds. So what is accuracy? We have discussed. As the input is given, we will get the output. If the input is 100% correct, output will be 100% error free. The next is storage capability. Memory is a very important characteristic of computer. If there is no memory, then we cannot store anything. So computer has much more storage capacity than your human being. Human being कुछ हद तक डेटा स्टोर कर सकता है अपने माइंड में, बट आपका जो ये कंप्यूटर डिवाइस है, इट कैन स्टोर एंडलेस डेटा. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन हार्ड डिस्क. The next is diligence. Unlike human beings, computer is free from tiredness, lack of concentration. It can work continuously without any error or boredom. The next is versatility. A computer is a very versatile machine. It is flexible in performing the jobs to be done, and now it is not limited. मैंने आपको बताया कि schools and military तक limited नहीं है. Now we are using this device in every field. घर में भी ये डिवाइस हम यूज़ करते हैं, वॉर्स में भी यूज़ करते हैं, राइट? बैंक्स, एटीएम मशीन्स, लाइब्रेरीज, रेलवेज, हम हर जगह कंप्यूटर डिवाइस यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी. कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन. जल्दी ख़राब नहीं होता. इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ. नेक्स्ट इज़ ऑटोमेशन. It is an automatic machine. It works according to the instructions given, but at the input side. After that, it will work automatically. The next is your what all are the disadvantages of computer. कोई machine है बेटा, if it has advantages, it also has some disadvantages. First is your no IQ. It is a dumb machine. It has no intelligence. काम तेज़ी से करता है, बट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन बाय ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग ने ही तो ये सिस्टम बनाया है. सो इट इज़ नॉट सुपीरियर देन योर ह्यूमन बीइंग, बट समटाइम्स हम ये कह सकते हैं स्पीड को लेकर या मेमोरी स्टोरेज में, इन सब में कंप्यूटर सुपीरियर हो जाता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग. बट इट इज़ ऑल्सो अ डम मशीन. ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर. Computer cannot take any decision on its own. It is also known as GIGO.
What is ego? Garbage in, garbage out. जैसा दोगे, जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट मिलेगा. 100% अगर गार्बेज इनपुट दोगे तो 100% गार्बेज ही आउटपुट आएगा. If input 100% error free है, then output will also be 100% error free. It needs updation every time. हर दिन कुछ ना कुछ अपडेशन आता है. It needs requirement. So, it needs updation also every time. It has to be updated. पुराना सिस्टम नहीं यूज़ कर सकते, नए फीचर्स की ज़रूरत होती है. So, it needs updation. The next is environment. Environment जो होता है वो क्लीन होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए. ज़्यादा गर्म environment भी नहीं ये कंट्रोल कर सकता. Again, this is costly. एक कंप्यूटर को इंस्टॉल करना इज़ नॉट ईजी टास्क. इट नीड्स सम कॉस्ट. द नेक्स्ट इज इतने टास्क परफॉर्म कर रहा है, सो देयर इज एन हीटिंग इशू. हीटिंग इशू होता है, वो अलग बात है कि कूलिंग फैंस लगे होते हैं, बट स्टिल इट हैज़ सम हीटिंग इशूज. The next is what all are the classification of computers? How the computers are classified? Computers are classified according to the types, according to the size. Right now we will be studying about the classification according to size. So the first is your personal computer. It is a small compact computer which is mainly designed to be used by one person. ये हम mainly schools में use करते हैं, हम अपने होम में यूज़ करते हैं. एक पर्सन एट अ टाइम काम कर सकता है. इट कंटेन्स अ प्रोसेसर, मेमोरी, वन और मोर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होता है, लाइक योर नॉर्मल पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. सो द मेन एग्जाम्पल इज योर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स विच वी आर यूजिंग. द नेक्स्ट इज योर लैपटॉप. It is another form of your personal computer. It is also known as your notebook computers, but they are portable. आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म में रख दिए जाते हैं एंड वी कैन नॉट कैरी देम आउट. बट लैपटॉप्स जो हैं हम इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं. इट वे अराउंड 2 kg. 2 kg का अराउंड साइज होता है इसका. इट हैज़ अ कीबोर्ड, फ्लैट स्क्रीन होती है, पेंटियम का आपका प्रोसेसर होता है, कलर डिस्प्ले, प्रोसेसर पेंटियम का, दैट इज़ योर CPU चिप. ओके, सो लैपटॉप्स यूज़ मिनिएचर कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज़ करता है, इसीलिए ये डेस्कटॉप कंपेयर अगर हम करें डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप को, तो इट कंज्यूम्स लेस पावर एज कंपेयर टू योर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. कैसे दिखता है लैपटॉप? यू हैव ऑलरेडी सीन. द नेक्स्ट इज योर वर्क स्टेशन. अनदर क्लासिफिकेशन साइज में ही आता है वर्क स्टेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडवांस डेस्कटॉप मशीन. होता डेस्कटॉप मशीन की तरह ही है, बट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एंड इट इज़ मोस्ट नहीं कहेंगे, इट इज़ मोर पावरफुल एज कंपेयर टू योर पर्सनल कंप्यूटर्स. सो इसकी 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड होती है, प्रोसेसिंग स्पीड, एज कंपेयर टू योर पर्सनल कंप्यूटर्स. जितना काम पर्सनल कंप्यूटर कर रहा है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा फास्ट कौन करता है? वर्क स्टेशन. दे हैव वेरी गुड ग्राफिक फैसिलिटीज़. बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स होती हैं. ग्राफिक इज जो आप स्क्रीन की क्वालिटी देखते हो, आप वीडियो देखते हो, गेम्स खेलते हो इन योर सिस्टम, वो कैसी ग्राफिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. इट इज़ वेरी गुड. एंड लार्ज वीडियो स्क्रीन्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं वर्क स्टेशन की. इट इज़ यूज टू डेवलप गेम्स. इट हेल्प्स अस टू क्रिएट 2D 3D ग्राफिक्स, 3D मॉडल्स, एनिमेशन इफेक्ट्स. ये सब हम वर्क स्टेशन से परफॉर्म ईजीली कर पाते हैं बिकॉज इट contains a very good graphic facility. So how it looks like? The next is your server. They are the special computers that has a number of smaller computers connected to it in the network. छोटे छोटे कंप्यूटर्स हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं सर्वर के साथ.
सर्वर एक सेंटर हब की तरह होता है जो सब में नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। एक दूसरे के साथ सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वर। Servers basically helps to share files and resources and hardware to each and every system, and another thing, it forms a network so that each and every computer gets connected to it. कैसे दिखता है server? Let's see. So now what is mainframe computers? There are organizations such as banks, insurance companies, railways. यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन, राइट। अब इतना ज़्यादा हैवी डेटा आ रहा है, हैवी डेटा को प्रोसेस करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज डिस्क की ज़रूरत होती है। So these computers are much bigger and faster than your workstations and several hundred times more expensive भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा costly होते हैं ये, but they are big and faster as compared to workstations. 100 people at a time can work in mainframe computers. These type of computers are called mainframes. So ये कैसे दिखते हैं? Let's see. These are your mainframe computers in which 100 people, 100 or 1000 people can work at a time. Now let's see what all are the supercomputers. Supercomputers are the fastest and most powerful of all. They are normally used to solve problems which have complex calculation. जो जिनकी बहुत ही difficult calculations होती हैं, बहुत difficult problems होती हैं, ये उसमें आपको हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्रॉब्लम्स आर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो, वेदर फॉरकास्टिंग करना हो, वेदर प्रेडिक्शन होता है ना, आप वेदर प्रेडिक्शन देख पाते हो कि कल कैसा मौसम होगा, नेक्स्ट वीक कैसा होगा, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। मिसाइल्स लॉन्च करना, डिज़ाइनिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ड्रोन बनाना, वो सब सुपर कंप्यूटर डील करता है। तो ये पूरा एक रूम का साइज, इंटायर रूम साइज ले लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। देखो कितना बिग साइज के होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर ऑल माय वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।